Jai Vishnu, Jai Bharat. Good morning, everybody. World, let us start with national anthem. भारत का राष्ट्रीय गान थोड़ा चेंज करके जन गण मन अधिनायक जय हे भारत संविधान भारत भाग्य विधाता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम विंध्य हिमाचल तावी यमुना कृष्ण सरस्वती ब्रह्मपुत्र गंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा सर्वधर्म भारत नागरिक भारत विधाता जनगण मंगल नायक जय हे भारत संविधान भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सुजलम सुफलम मलया शीतलम मलया शीतलम सहस्या श्यामलम मातरम वंदे मातरम जय भारत जय विश्व 26th March 2020, one more day and dangerous day again. Virus corona which has broken heads of 8 billion people. 8 billion people of world. Our heads are broken by this because our heads have failed to understand this. इस वायरस ने 8 बिलियन लोगों के दिमाग को तोड़ दिया है. समझ नहीं पा रहे दुनिया में विश्व में ये क्या बीमारी आ गई, बढ़ती जा रही है. Every day is rapidly. I just was reading a news of New York, USA. It's moving like bullet train. बुलेट ट्रेन की स्पीड से न्यूयॉर्क में चल रहा है. बुलेट ट्रेन की स्पीड से. आप सोचिए, if America is affected like this, what others are? America, world power, and newsman says in New York, this is moving. Corona is spreading like bullet train. What else you want to know about this? US is not able to understand it. Trump has failed, but Trump is claiming that I will start opening economy, you can say before second week of April. Well, Trump is very intelligent. I'm not going to say something about that. But it seems that leaders all over the world have become in panic. They are in panic world. They are living in a world where there is no logical answer they are getting. They are not logically understanding this also. And there is a rumor that another virus is coming from China. Rumor only. I read news, but it is something else. They are saying it's coming like this. But that's related to rodents. Rodents like rats, like some other. If you are come in touch with those rodents or they urine or they bite you, that virus is named as Hatta virus. Hatta means if by chance some rat, some mice bites you, कोई चूहा कोई काट जाता है आपको, कोई rodent काट जाता है आपको, या उसका आपके ऊपर कहीं पर पेशाब कर जाता है, तो वो उससे फैलता है. वो ये चीज नहीं है और वो जानते हैं लोग इसके बारे में, तो उसकी तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट दैट. There is such virus is spreading in addition to swine and others. So that is all known. They should be not dangerous as such as people are spreading rumors. जैसी अफवाह उड़ाई जा रही हैं, वो चीज़ उसमें नहीं है. हत्ता वायरस उसका नाम है, वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है. वो चीज़ नहीं है जो कोरोना है. कोरोना is something still magical. It's a magical act done because it is secret till now. Yes, it is also right that 40% of world is under lockdown and others are taking different actions. But
Whole world is in panic, that is true. And जब panic होता है, when this panic, you are in state of panic, you cannot do anything. Even if you write examination in panic, you can't answer. So panic is no answer. But before going further, I would like to talk about our country in connection with corona. That's very important point, and we should feel shame of that point. Every citizen of this country. आप जानते हैं क्या हो रहा है हमारे देश की वो लोग जो बहुत गरीब, जिसको आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं सड़क पे, ऐसे काम जिसमें रोज कमाते हैं रोज खाते हैं. They earn daily and they live there. Very poor people, maybe hardly earning 200 rupees a day, 300 rupees a day, very low profile people. You cannot say that just human being they are. They are living out of daily earn. And this amount, this from, they are in every state of this country. You go to Gujarat, you go to Madras, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, wherever you go, you will find those people are supporting your life of middle class people, life of rich class people. They are, I can say, about 25 to 35 crores, no exact counting. Our great country, I appreciate that lockdown is working, but lockdown doesn't mean you forget people. I'm in my home, you are in your home, we are all working in our home or sleeping in our home or doing whatever. Just in 2-3 hours, decision was taken. I will affect you from this. You have to stay. Oh, that is fine. That means a logical decision. But before resorting to logical decision, is there no one to think in government about those people who are left to air, who are left to environment? They were pushed out of homes. News says, there's news that they themselves say that they were asked to vacate their houses, means wherever they were living in rent or somewhere free of rent, and they are pushed out. And it's from every way. Now somebody is on the road living, this is location about 500 kilometer from home or 300 kilometer home, 200 kilometer from home or 500, means they are not indoors. I saw myself people moving when yesterday I saw a queue of people, men, women, children, all walking, female girls with their, with their belongings kept on their heads in some form of gutteri, what you call this gutteri, and having their bags hung on their waists. Boys, girls, children, youth, all were walking, and they were walking and going to some place unknown because they were moving out of their wherever they are accommodated, because police did not allow, I think, and they were walking to their homes. Just walking, how many days it will take, nobody knows. People walk from Gujarat to Rajasthan, from here to there to here. Means completely crores of people are being affected, and nobody thought about them. सोचा नहीं उनके बारे में किसी ने. एक दो नहीं, 30 crores, in crores they are, exact figure nobody knows. I got this figure from some news channel, private news channels, YouTube, that they are in crores, and most of them are reserved class or poor people and minorities. Poor people means who wants 200, 300 to 500 rupees a day. You cannot say that is a middle class person, that person is very high profile. So if they are moving on road, is even Delhi, around Delhi, borders are sealed and people are stranded in NCR. And our chief justice, everything is fine. But it's very easy for these politicians to declare everything is fine, just like Trump has declared, I'll take care of this. Means it's very easy for politicians to be full whole world. And I'm blaming all politicians, our country politicians, others. They do not, at this moment, they are not considering humans as humans. They are considering, okay, if you want to save yourself or get lost, die. If as prime minister, as president, I have no role as such, and I can't blame myself. But as citizen, I have a role. I have a right to question, I have a right to object. Means you took a decision, that's very fine. We do not object to that. There is safety of nation, and people are with you. There's no doubt. Indeed, they are. Nevertheless,
Why you did not care about those people who are now walking on road? Why you could not anticipate this problem, and you are not telling this to anybody? News channels are not telling this. Your news, the great news channels, you can say, and print media, they are not giving this. Why? Yeah, I cannot. Can you take responsibility of crowds of people walking on road in this situation? Are they not subject to their lives risk? You think they should walk hundreds of kilometers before reaching their home, and on way there is no water, there is no food. Who shall provide them food? Yes, if some citizens like Sardar or Sikhs, they provide them as charity, that is something else. But where is responsible arrangement? There is no responsible arrangement. You may announce anything from your parliament or from office. It doesn't make anything if people continue to suffer like this. अगर लोगों ने ऐसे ही चलना है, मरना है, स्ट्रगल संघर्ष करना है अपने घर पहुंचने के लिए, वो भी कोई कुछ मांग हो नहीं रहे आपसे, वो उनको ले जाने की, घर की पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी थी? ये कौन बताएगा? बड़ा दुख हुआ मुझे, सच बता रहा हूँ, जिंदगी में ऐसा दुख मुझे कभी नहीं, गुस्सा नहीं आया ऐसा। कुछ भी है, वो देश के नागरिक हैं, गरीब हैं, जो भी है, और अगर वो नहीं काम करेंगे तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रख लेना, आपके मकान वही बनाते हैं, आपके दूसरे काम वही करते हैं, आपका बोझा वही उठाते हैं। जैसे वो गाना बनाया था, हम सबका बोझा उठाते हैं, वो भी आपका बोझा उठाते हैं। उनकी किस्मत है कि वो ऐसा काम करते हैं आपके लिए, लेकिन आपने तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, और ऊपर से पुलिस वाले उनकी पिटाई भी करते हैं। क्या है ये सब? ये पुलिस कौन होती है उनको पीटने वाली, जिसके पास रहने की जगह नहीं है? आपने कहा क्यों घूम रहे हैं सड़क पे, कहाँ जाएंगे वो? शर्म आती है मुझे ऐसे पुलिस पे, और शर्म आती है ऐसे मंत्रालयों पे जिनको कोई चिंता नहीं है, चाहे वो राज्य के मंत्रालय हों या वो केंद्र के मंत्रालय हों, किसी को कोई चिंता नहीं है। भारत देश का ये हाल अगर ये विदेशों में होता तो मुझे इतनी बात नहीं होती, कि वो फिर भी कुछ तो करते हैं। हमारे देश जिसमें 140 करोड़ लोग हों, और वहाँ 20, 30, 40 करोड़ लोगों को ये हाल कर दिया जाए, मैं तो यही कहूँगा कि आपने किया है। अरे भाई, नो प्रॉब्लम, यू वांटेड लॉकडाउन, यू प्रपोज लॉकडाउन, दैट इज ओके, बट व्हाट अबाउट दोस पीपल, वेयर शैल दे गो? Why did you not give time, or you do not think before it that you should arrange transport, buses or special trains, and still you have not done anything? I saw yesterday evening, just not even 12 hours at 5 o'clock, they was moving around from my home. I understood what they are. A queue of those people putting their gantries on their heads, hanging their bags on their waist, and having some kids with them, walking, boys, girls, youth, kids, women, men. Strange. People, 140 crore people, such a great country, such a big country, and so-called such a, you can say, appreciable prime minister according to Bhags. And neither prime minister can think nor president can think, then who shall think about them? I don't understand what's happening. There is no one having concentration in this country to think about them. You leave them and let them die. I can't walk 300 kilometers, believe me. I can walk in patches, let us say 10 kilometers, right? But just to reach home, you are walking so many kilometers. Shame on this country. Poor men are walking. Let rich walk. Let Ambani Adani walk. Let film stars walk. We can say, okay, then it's fine. Let them walk so many kilometers. Let Prime Minister walk. Let President walk. And then realize struggle. What is struggle? We are shameful nation. We are shameful society. I am shameful that I am not able to help them, because I have no such resources. Where should I keep them? This is people of Bharat. They may not die of corona, certainly, but they will die of hunger.
They will die of some other disease, blood pressure, or some other tension, or they will collapse on the road itself. Because in day it's more than 31, 32 degrees Celsius now. No water, dehydration. Who shall be responsible for them? It's very terrific, very, you can say, sentimental question, very emotional question. Because directly or indirectly, I am also linked to that community of people. They work for everybody. They work for all citizens. They make houses. They are involved in many other activities. They help us somewhere all over country. But because they have no other resource, they work for us and we have left them. We are all inside. We have piled up foods. We have collected food and stored in our homes. 2 months food. One who has money by telephone they are ordering and food is coming, and shops are closed. And those poor people who are standing on corners of streets just with their tela, their vehicle or some other arrangement, they are being beaten by police. Why you are here? You know, some kind of evil spirit I think has come somewhere in form of corona and in form of our conduct. Our conduct has become devil's nature we are now. You should give time, you should ask railways, you should ask all transport people, arrange them. You may take 2 days, 3 days, let them reach their home safely, and then only you can say go for lockdown. Why you did not care for them? Should you not raise a question to government? Every government, central government, state government, Kejriwal yesterday around Delhi, we are safe. There's no problem here. Kejriwal, how you are safe? You are by education an engineer. Can't you understand problems of workers? They are workers. They are standard. People are standard in borders. You are not talking of them. And all other chief ministers, at every border, there's some problem. Nobody is talking for them. Is this real management? You are then anti-human, all of you. You are not human. Your mind is burst, is broken. All government mind and state government's mind. You are not allowing any facility to them. I have posted on Facebook many such photographs from certain sources. There are videos available and put my video as well in anguish mode because I can't digest this. They are my brothers and sisters, your brothers and sisters. So should we leave them like this? I don't know, you will take it seriously, or because I have seen 100 people are enjoying, they are still accepting anything. If you kill people, they will accept, but don't criticize government. But I am not of that nature. I will keep criticizing because wrong is wrong and right is right. But if there is something wrong against public and you are putting public to such system, such circumstances, I shall certainly express my anguish, my anger, because that's my right. And those who are afraid, let them be covered. They may be whosoever, to whomever party they belong to, I least bother. Because I have used workers in my life. I am a construction field manager and I know what workers can do for me. Middle class won't work for me, riches won't work for me, but without this people's support, I cannot work. If they work, I am supposed to have worked. If they don't work, I am not working at all. अगर वो नहीं काम करेंगे हमारे लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे. और ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो आपके काम आते हैं, सीधे रूप से या दूसरे रूप से, और आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो. बड़ा अच्छी बात है. सब मैं क्या कहूँ इससे आगे. Corona is moving very fast. We are saying we have only these number of cases. People are posting on Facebook. Only these cases we have. All other people having so many number of cases in thousands. We are only. Don't be happy. I'm just advising everybody.
It's not even started yet. Of course, we are not having that temperature where it should move, but temperature doesn't work when people are coming from overseas and we are allowing them. So they will certainly approve Corona enter here, and Corona has entered here, and it will continue. Of course, arrangements, instructions are fine, keep distancing, stay home, in home, but even then, you are just taking protection, you are not taking solution. In China, they retested those who were released from hospitals, who were discharged. They called them back, some of them, and retested. चाइना ने जिनको पहले ठीक करके भेजा था उनको दोबारा बुलाया रिसर्च पर्पस के लिए, अनुसंधान के लिए, कि इनको एक बार फिर टेस्ट किया जाए कि इतने दिन बाद इन पर क्या इम्पैक्ट आया या नहीं आया. More than 10% people, patients were again subject to impact of corona. This is latest information of yesterday. That 10% patients or around 10% patients have gone back to corona sphere, and maybe others soon get. So we cannot say that treatment exists. It does not exist. Only precautionary measures we have. And people involved are claiming, I have won over this. Our great Trump, US President Trump, he speaks very loudly with overconfidence that he has won this war. I don't understand what does he mean by that. He has won this war and he shall open economy maybe within 2 weeks. I can't understand what does he mean. And his own people, of course, they do not understand what does he mean by that, but he only understands that. Let him understand, let him declare. There is no dearth of fools in this time, because people have no solution. They are getting nervous. So foolishness is also a part of that. Stupidity is also another part of that, because you have no answer to this problem. Well, no problem. You can speak anything, but facts remains fact. This is a politician, and these politicians have no morals. They have no basis. They can speak anything. All over the world is like that. Some countries are hiding, some are exposing, some are giving right news. But England missed chance, we missed chance. Russia may be hiding something. America did not listen. This means madness also exists somewhere along with corona. One is corona and one is madness and one is ignorance. All properties are working simultaneously. Nervousness is there, madness is there, stupidity is there, no solution is there, and they are only conferring. करिए ओके, कॉन्फ्रेंस कीजिए आप, कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या करेंगे कॉन्फ्रेंस करके? सब प्रॉब्लम एक ही है, सब जगह है. एक आध कंट्री को छोड़ दीजिए आप, यमन है जैसे, या कोई एक आध और होगा जहां अभी ये प्रॉब्लम आ ही नहीं है. बहुतों का यमन ने भाई आप ये लॉकडाउन कीजिए, सुनता नहीं है. नहीं जी नहीं, हम जब तक हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हम नहीं करेंगे. ठीक है भाई, आप वार जमन हो, पिछले 5-6 साल से लड़ाई चल रही है आपके यहाँ, आप परेशान तो वैसे ही हो, मर तो वैसे ही रहे होंगे आप. बॉम्ब जितने चल रहे हैं आपके यहाँ, कितनी मिसाइल चल रही होंगी, कितनी बंदूकें चल रही होंगी, तो आपके यहाँ तो कोरोना शायद आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डर जाएगा आपकी बंदूकों से. ऐसा नहीं, वो बंदूकों से नहीं डरता. अगर डरता होता तो सीरिया में भी नहीं आता, लीबिया में भी नहीं आता, लेकिन वहां भी है. कोरोना किसी से नहीं डरता. कोरोना डरता है तो उसके विरोधी गर्मी से डरता है. गर्मी हो जाएगी तो शायद वो चला जाएगा, ऐसा लगता है. जो सच भी कह रही है, तो गर्मी तो अभी आने वाली नहीं है. हमारे देश में तो आने वाली है, आ भी शुरू हो भी गई है आना. अभी भी 22 is now 22 degrees or 21 degrees, and in daytime it will be 31, 32. So early morning and during night temperature is a little rising, but it's not enough. On an average, it's not enough, so it can stop generation breeding of corn.
Maybe in May or in April, some relief we get, but those where it's the cold belt, you can say, like Iran, it's part of Pakistan, Afghanistan, European countries, 27, 28, 9, whatever countries are there, then transferring to England, this is complete cold belt, and then jumping over the Atlantic and going to US and Canada, complete cold. So they have to wait. We are waiting. We are at margin. You can say on a border of temperature change, but temperature is one part. We should not be happy. हमें खुशी नहीं होनी चाहिए सोच के कि गर्मी आ जाएगी तो कोरोना साथ चले जाएंगे. ये सर कोरोना जाने वाले नहीं है इतने आसानी से कि ये दूसरे भी एनवायरमेंट में रह सकते हैं और जो और भी खतरनाक है. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, पानी कितना है हवा में, what air composition of water is having a relative humidity which is written in percentages, 80%, 90%, 70%, whatever percentage. If there's a wind, you drop humidity, it falls. If it is 60 kilometer, 25 kilometer, certainly humidity shall go away because condensation of water means humidity in air, and due to wind effect it drops. So that environment with this low humidity, corona is not happy. If there's humid weather and temperature less, corona is feels very happy. Oh, I am happy. It's my food, it's my residence. So corona stays there. It's not very simple corona. It's shaitan corona. It's, you can say, a kind of magical bomb. Without an explosion this works. You cannot, if you use chemical bomb, you cannot cover whole world. If you use nuclear bomb, you cannot cover whole world. But it has moved throughout world, covering all globe area. What is smart joy? What's a smart power it is? What if smart? We should salute it now. Of course, it's our enemy, yet it has indicated its power that I am much stronger than everybody else. You're all so small. You're all so dwarfed, so tiny Lilliput you are. Actually, if you compare to Corona, we are Lilliput. Yeah, you might have heard this story, Lilliput. The same thing. We are all Lilliput. If we value ourselves, give value to ourselves, Corona, we are negative. We are nothing. But we are human being. It's our duty to handle it, and we are handling it all over the world. Yes, there are problems, there are people, there are attacks of corona, and people are dying also. Still, it's not in crores, it's not in billions, it's in thousands only. Maybe you are not getting complete news. Even then, they say, Russia say, I'm safe. Those Russia may be hiding something, who knows? And we don't know actually our state because we are a big country, thickly populated, and maybe we remain safe, I hope. But our you can say numbers which we say this is our country, so many have been affected. I can't trust that. Because in this situation, in this environment, every country hides. Just as China is hiding. You think China shall take facts? No, no, you will not get facts on China. Well, they are also smart people like we are, like all others. So we cannot underestimate them. But forget this point. We know facts won't come. But we have to take care of people where we failed. Arrangements are missing in our country. For those who have power, they have purchased materials, food materials, for months together. See what people we are. You have money, you are rich, you buy whatever you want to buy. And then you leave no material in market. Yes, if suppose poor has money and there is no grain in market, what shall money do? If you say you will give them money, arrange to give them food better rather than giving them money. Money in this time is no value. If you want to help them, you arrange in a way
that your truck or vehicle goes into that street or near street and delivers to people food. That is important. But it has not been seen till now. Yeah, it's not ongoing. No sign of that, only news. News, I think those people are better than government who are serving people without any interest, like Sikh community, Gurdwaras, or those who are doing such kind of bhandaras. I am not sure they are doing bhandaras, nothing is seen. I'm not seeing anything. But however, if something is done as part of social charity, that must be admired, and we admire that. But police is not right. Police has got some, I don't understand, self-assumed power to beat people. If people person is not doing any illegal activity, if somebody is walking on road or weeping on road, where should I go? What should I do? I have no place to stay. I have nothing to eat. And you are saying, I don't know, you start beating them, then you are not police. You are a fool. You are yourself a criminal. You have no right to beat someone if that person is not breaking any law. If suppose someone is on road, where should he go if he has no place to go? You tell me. If I have no place to go, on that location I am homeless, no home, my home has been evacuated, I've been thrown out of that home. Where shall I go? My home is 500 kilometers from here. I have to walk 500 kilometers. It's really extraordinarily self-created mistakes which we are doing. We don't understand this, why doing all this. Why it's happening? It's really surprising to me. How could we do this? How could we go to such an extent? It's very surprising. But it is happening. So, dear people, dear friends, think on this. This is our country after all. This is not country of fools. We are educated society. And don't, at this moment, don't speak or don't talk against someone. I have seen people are talking against my writings. You talk against my writing, it shall not make a difference to me. You can, and people are writing that. They are writing something against me. Right. Even somebody wrote that I am wrong. मैं दिमाग पता नहीं क्या लिखते हैं हिंदी में वो पकाते हो रोज आके वीडियो पे सॉरी फेसबुक पे आके वीडियो में पकाते हो सबको मेरे को पता नहीं इसका क्या मतलब आई डोंट नो क्या पकाता हूँ क्या पकाता हूँ खैर मुझे उनसे कुछ नहीं लेना जहाँ अच्छे लोग होते हैं पागल भी होते हैं बेवकूफ़ लोगों का मैं क्या लालच करूँ और बड़े बड़े बैठे हैं अनपढ़ गंवार उनको ना कोई समझा सकता है ना कोई समझ सकता है मुझे उनकी चिंता नहीं है मुझे तो उनकी चिंता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं मेरी किस्मत अच्छी है मैं उस संघर्ष में शामिल नहीं मैं भी हो सकता था मैं भी गरीब हो सकता था इतने लेवल का हो सकता था कि रोटी नहीं मिलती काश मेरी ऐसी हालत तो नहीं है लेकिन उनकी तो है दूसरा इक्विपमेंट सारी दुनिया में प्रॉब्लम है ऑल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है मर रहे हैं डॉक्टर मर रहे हैं अब बताइए डॉक्टर्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड एट दिस स्टेज यू आर ट्राइंग टू ऑर्डर America like country is trying to purchase something from others. Who shall do? You can manufacture it now. Manufacture yourself. But it will take time. And by that time, you will certainly lose people. God has given us a time and told us now that you do not consider yourself smart enough that you will handle this earth. Now they are thinking, public is thinking, whole world is thinking, reduce your food habits, change them, don't consume non-vegetarian. They are thinking automatically, I am not asking them. Europe is thinking that we should change food habits. We should care for environment.
Ultimately, environment has caused all this change of environment. Temperature rise, temperature fall both. Temperature rise means that is temperature rise, but also temperature fall. Cold is also unusual nowadays, and heat is also unusual. Both have destroyed plantation, both have destroyed trees, both have destroyed greenery. If it's too cold, greenery is affected. If it's too hot, greenery is affected. बहुत गर्मी हो बहुत सर्दी हो, दोनों में हरियाली जाती ही है। हरियाली दोनों में जाती है, पेड़ पौधे दोनों में मरते हैं, और ये होता है। इस बात को we have to understand all this. We have to understand all this and see how to work. Let me see what this man is saying. These people are calling and disturbing. It's very important to take into considerations all these points. And if we don't take these points into our considerations, we miss so many facts. That facts we must know. And if we don't know, yes, please, gentlemen, what do you have to say? Kuch kehna hai, bhai? I'm lying. Are you going to say something? I got lost if you don't nonsense guy. Stupid guy. Bloody fools. Well, I have nothing more to say about this, but I would request all friends or public, you are staying in home, you are staying in home, and it's very difficult to pass your time. It's very difficult to pass your time in home whole day. It's not easy. You cannot sleep 24 hours a day, and if you sleep a lot, you get tired. Your mind stops working. You lose your memory power. Omar, Jammu Kashmir, Omar Abdullah, what is his name, Chief Minister, who is released now. He published his statement regarding how to live every day, because he was in arrest, and he followed some time schedule. I was impressed by what he wrote. He wrote that I had a timetable and I used that every day. Though I was in jail, I did not consider I was in jail as a normal life. I lived there, and I complied with schedule, my program, my timetable. That's right. That's right. He's right. I agree with him. You are in your under your control. You should also fix your time. First priority should be, maybe you do not have any chance to fulfill your habit. Maybe you are fond of something, or you have some hunger to learn. If you are educated one, you can learn a lot. You have, maybe, how don't you know, knows it will take 1 month or 2 months. How many months shall this lockdown go? Nobody knows. And even if it's open, no jobs are there. You have to stay at home until economy comes back. Best thing is to keep yourself busy. That's best one. And how to keep busy? Because you have no habit of writing, you have no habit of reading, you have no habit of doing something concrete. Do it now. I have seen many people on the internet. They don't like English. You see, you are Indian, you should use Hindi. This is a very foolishness. Means you are Indian, you should not speak English. What does it mean? I would say better learn something. You can learn English structure, you can learn translation, you can learn how to speak, how to write. This is good period. You can download constitution of this country or some other document you like to read. You can read regarding your profession, regarding your trade. This is good time. You can improve your knowledge. If you never wrote right now, and see you can write or not, you can draft or not, it's good time. You can, yeah, for news you watch, I know. News is not a problem. But analysis of your problems, you can see what you are going to do in future. There are so many acts which you missed because you be remaining busy all the time in your career, in your work. You can't do that. But out of this 24 hours a day, you have about 12 hours free.
because you are sleeping, you are taking food, you are cooking food, whatever activity you do follow, there is still time. If you take 3 or 4 hours daily to be busy on such new activities, you'll get some benefit of that. And it will keep your mind busy. If you want to do prayer, okay, that is your usual habit, you can do prayer. Nobody says, but prayer also has some limit. For some Navratri is going on, or they are busy in that prayer, no problem. But it is better to enhance, to augment your knowledge by whatever way. You can do that, you can benefit out of that because you can concentrate at this time. You are saving a lot of time. Don't waste it. इस समय को खराब मत कीजिए. समय बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं मिलेगा. आप बिजी रहेंगे हर रोज, फिर दोबारा जब लाइफ शुरू होगी 3-4 घंटे आपके आने जाने में लग जाते हैं वो भी खराब होता है टाइम आपका. और फिर 10 घंटे आप काम भी करते हो, कोई 8 घंटे करता होगा, फिर आके खाना बनाते होंगे, खाते होंगे, सो जाते होंगे. तो वो जो आपका एक अपने आप को आगे बढ़ाने का एक सामान चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान आपको मिलता नहीं, वो चांस आपको मिलता नहीं. इस समय से अच्छा समय, चाहे वो 1 महीने का है, जितना भी है, मैं तो यही कह सकता हूँ उसको आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा होगा. और दूसरों से बता सकते हैं आप. अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हैं लोगों से, वीडियो पे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. आपकी जैसी भी शक्ति है. मैं तो सिर्फ इस सलाह दे रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको करना होगा एक नागरिक होने के नाते. और हाँ, एक और बात है, कल मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पर जो लोड बढ़ गया आजकल, इट हैज बीन लोडिंग, ओवरलोडिंग. एग्जाम्पल, फेसबुक ने अनाउंस किया कि अब हमारी जो वीडियो कॉल्स हैं, जो दूसरी कॉल्स हैं, डबल हो गई. एक तो ये कि जो लोग घर से काम करते हैं, जो कर रहे हैं, उनका भी लोड बढ़ गया, उनकी साइटें नहीं खुल रही. और अब जैसे ये बीच में फोन आ रही हैं, वीडियो कॉल आ रही हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, लेकिन फ्रेंड्स हैं, भेजते हैं, रिसीव भी करनी पड़ती हैं. अच्छी बात है, हम रेडी रिसीव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खामा नहीं, बिना बात. अरे भाई, आप मेरे को फोन करना चाहते हैं, मेरी अच्छी बात है, पर बात कीजिए. क्या प्रॉब्लम है आपकी? गलत काम के लिए नहीं है ये आप मेरे पास कॉल करते हैं तो आप बताइए आपने कॉल क्यों की, आपका पर्पस क्या है कॉल करने का. होंगे आप फ्रेंड, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार मिल गया खामा कॉल करने का. एक तो आपने अपना समय बर्बाद किया कॉल करके, मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो, और उस इंटरनेट की सर्वर का जिसके थ्रू आपकी कॉल आ रही, जबरदस्ती आप उसको लोड कर रहे हैं. फ्री का मतलब ये नहीं होता उसको खराब कर दो. कोई ना कोई तो उसको यूज करेगा, वो जो यूज सही काम के लिए करेगा आपकी वजह से वो भी रुक गया. मतलब आपने एक तरह का टेररिज्म फैला रहे हैं आप इंटरनेट पे, बिना मतलब कॉल कर करके. क्या मतलब है कॉल कर रहे हैं? क्या करना है आपने मेरे से बात करके? या तो बात कीजिए, ढंग से कीजिए, पूछिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, या आप मुझे बताइए मुझे क्या बोलना चाहिए. या मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है. मैंने बहुतों से बात की, जब कोई बात करता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो करने लगते हैं. अरे भाई, फिर फोन क्यों कर रहे हैं आप? क्यों मेरे पास फोन कर? फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी किसी को करें. अरे आपको फ्रेंडशिप इसलिए देते हैं कि शायद कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे को काम आ जाए. इसका मतलब ये तो फोन ही कर रहे हैं, आप बार बार करे जाए, बार बार करे जाए. हर कंट्री से कहाँ से आ जाते हैं बिना मतलब फोन करे जाएंगे, नहीं मिलेगा, फिर करे जाएंगे, नहीं मिलेगा, फिर करे जाएंगे. पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉट मैड? अरे भाई, फोन नहीं मिल रहा तो बंद कर दो उसको. रश है, इसका मतलब साफ है, गधा भी समझता है. अगर आपका फोन नहीं मिल रहा, कट रहा है, बार बार वीडियो कॉल कट रही है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि सर्वर में जगह नहीं है आपको ट्रांसमिशन देने के लिए. इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में. मैं सुबह सुबह क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ? सोता मैं भी सो सकता हूँ. मैं 2 बजे उठ जाता हूँ रोज, सुबह 2 से पहले उठ जाता हूँ, इसलिए कि सुबह टाइम थोड़ा होता है.
मुझे चाय भी बनानी है, पीना भी है, उसके बाद आके आपसे बात भी करनी है 2 घंटे 3 घंटे, जैसे भी तुक्का लगे। उसके बाद फिर लोड बढ़ जाता है इस पे। आप बात को समझते नहीं है। मुझे बीमारी है क्या समझते समझा? इसलिए कि मैं चाहता हूं जो भी मेरे पास है अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर कर सकूं, और कोई पर्पस नहीं है उसका। लेकिन आप इस चीज को पता नहीं क्या समझते हैं। मेरी आदत है अपनी नॉलेज शेयर करने का, क्योंकि आप ही तो अकेले नहीं है, मेरे साथ और भी लोग हैं। मेरे पास कैडर के भी लोग होंगे जो सालों साल से मिले नहीं है, शायद वो भी देखते हो और देखते हैं। तो इसमें क्या खराबी लगती है आपको? आप बदमाश होंगे और भी बदमाश होंगे, कोई बात नहीं, आप बदमाश रहिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कौन कैसा है मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अगर कुछ मुझसे लेना है विचारों का, ले लीजिए। अगर नहीं लेना तो भी कोई बात नहीं है, मेरा क्या जा रहा है। आप मेरे फ्रेंड आ गए एफबी पे होके, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना। किसी ने कहा जी आपके एफबी सारे बदमाश हैं। मेरे एफबी पे जितने दोस्त हैं, कोई रंडी है, कोई ये है, कोई वो है, ऐसे लिख रहे हैं मुझे। मैं टेलीविजन में तुम्हारी ये भेज दूंगा, तुम्हारे को बदनाम कर दूंगा। अब बताइए आप, एफबी पे जो दोस्त बनाया जाता है उसके पास जाके पहले मिलते हैं क्या? अरे भाई ठीक है, पब्लिक का फ्रेंड है वो, पब्लिक है वो, अब मुझे क्या लेना है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, ठीक है, अब तुम बात करनी है, कुछ सीखना है, देखना देखना देख लो, इतना ही है ना। मेरे मैसेज आपको मिल जाएंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा, आपके मुझे मिल जाएंगे। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका कैरेक्टर क्या है, आप क्या करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे पर्सनल फ्रेंड नहीं है, आप डे टू डे सिटिंग के नहीं है। ये हम आते हैं रोज बैठते हैं 2-4 घंटे गप्पे मारते हैं, वो फ्रेंडशिप ये नहीं है। ये फ्रेंडशिप वर्चुअल है, ये एक काल्पनिक फ्रेंडशिप है। लोग कोशिश करते हैं बात करने की, हमसे मिलो जी। लड़कियों ने कोशिश की जी मिलो, बार बार आते हैं। अरे भैया माफ करो भाई, ना मुझे लड़की में इंटरेस्ट है ना लड़के में इंटरेस्ट है। आपको कोई बात करनी है तो करो, नहीं तो बाय बाय। मेरे इस पे फ्रेंड रहना है, रह लें तो अनफ्रेंड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई खुशी नहीं है कि मेरे कितने फ्रेंड हो गए, मुझे कोई मिलता नहीं है उसमें। वो सिर्फ इसलिए है कि आप शायद कुछ मुझे दे दें या मुझसे कोई नॉलेज ले लें, और नहीं तो बस ठीक है चैटिंग कर ली, बात खत्म। लेकिन आप चाहते हैं पर्सनल होना। सोशल वेबसाइट पर्सनल होने के लिए नहीं होती, इसका नाम ही सोशल है। यहाँ पर्सनल कुछ है ही नहीं, ये तो सोशल क्यों कहते हैं इसको? ये सामाजिक है, विश्व समाज है ये। आप भारत के खाली नहीं है ये, मेरे अफ्रीका में भी बहुत से आते हैं, मेरे मिडिल ईस्ट से भी बहुत से आते हैं, अमेरिका कनाडा से भी बहुत से आते हैं। ये मत सोचो कि आप ही हो, बल्कि 50% ज्यादा वहां के लोग हैं। क्योंकि वो लोग नॉलेज को समझते हैं, वो लोग सीखना चाहते हैं, और यहाँ के लोग सीखना नहीं सिखाना चाहते हैं। फर्क इतना है। मेरे कोई शौक नहीं है किसी को देने का कि आ जाओ मेरे दोस्त बन जाओ। मीडियम है, उसको मीडियम की तरह लो। अरे पहले किताब खरीदनी पड़ती थी पढ़ने के लिए, सोचो पैसे देने पड़ते थे, बाजार जाना पड़ता था, मार्केट में अवेलेबल होती थी नहीं, पता भी नहीं होता था। तब कई चक्कर काटते थे, किताब लेके आते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, वहां से इशू करा के लाते थे, फिर पढ़ते थे, कुछ नोट्स बनाते थे। तो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, फोटो कॉपी नहीं कर सकते, फोटो कॉपी होती भी नहीं थी उस टाइम में। तो लिखते थे गिरा के घर में, चलो इस चैप्टर को लिख लो, उसको चलो, या कबाड़ी बाजार से खरीद के लाते थे। दरियागंज में दिल्ली में लगता था कबाड़ी बाजार, बंद कर दिया बाद में। वहाँ किताबें ही किताबें होती थी, सस्ती सस्ती मिल जाती थी। नॉलेज के लिए कुछ भी करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हम वैज्ञानिक तो है नहीं, हम अनुसंधान भी नहीं करते, क्या कर रहे हैं फिर, इंफॉर्मेशन ले लेनी पड़ेगी। उससे क्या होता है, राइटिंग की पावर बढ़ जाती है। आज तो राइट कोई करता नहीं है, कंप्यूटर है, टिक 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 हो गया। फिर भी राइटिंग जरूरी है। आप राइटिंग के फायदे नहीं समझते। आप जब राइटिंग करते हैं सोच के, तो आपके माइंड में भी प्लान बन जाता है, वही प्रोग्राम बन जाता है, याद रह जाता है आपको। पढ़ लीजिए आप, फिर भूल जाएंगे आधे घंटे में। पढ़ चैलेंज है मेरा, आप कोई चीज पढ़ लीजिए, बंद कर दीजिए, अगले दिन उसको आपको याद नहीं रहेगी मैं क्या करता, फिर खोल के देखेंगे फिर याद आ जाएगा, फिर बंद करके भूल जाएंगे, क्योंकि आपने राइटिंग वर्क छोड़ दिया। साइन भी शायद बहुत से लोग नहीं करते आजकल। वी हैव चेंज आवर रीडिंग कल्चर, स्टडिंग कल्चर, अंडरस्टैंडिंग कल्चर, और इतने कंजूस हो गए पूरा लिखते भी नहीं है आजकल फेसबुक पे। फॉर यू को 4 यू लिख दिया,
इतने कंजूस हो गए, लिख भी नहीं सकते हम पूरा। भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं कि मैं आपकी लैंग्वेज समझ सकूं, मैं तो पूरा लिखूंगा, मैं गधा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, बात कर, मैं इतना एडवांस नहीं जितने आप हैं। ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर को बताती हैं, आप कितने अटेंटिव हैं। इतने भी बड़े आप नहीं हुए कि आप पूरा लिख नहीं सकते। क्या दिक्कत है भाई, किसको दिखा रहे हो आप? बहुत बिजी हो, आपको टाइम नहीं है। ये काम स्टेनोग्राफी कर सकते थे, शॉर्ट लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड कहते थे उसको, ये उनका ऑक्यूपेशन है। आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए आपको स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, आप ट्रांसलेशन भी गलत करते हैं, आपको ग्रामर भी नहीं आती, और सच बात तो आपको मैथ्स भी नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपको हबड़ दबड़ में रहना है, हर काम शॉर्टकट में चलना है। अरे शॉर्टकट का मतलब कुछ और होता है, शॉर्टकट खाली ऊपर होता है, अंदर शॉर्टकट नहीं होता है। आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज है कि नहीं पता नहीं है, खाली पर्दे पे है, मॉनिटर पे शॉर्टकट का निशान है, अंदर शॉर्टकट नहीं है। अंदर पूरा प्रोसेस चलता है, पूरी मशीन लैंग्वेज जाती है, पूरे बाइट्स होते हैं, कोई कम नहीं होते उसमें। मैं कंप्यूटर का नहीं हूँ, लेकिन इतनी नॉलेज मैं भी रखता हूँ। इसलिए ज्यादा बनो मत, वक्त किसी का नहीं होता। टाइम इज फ्रेंड टू नन, यू हैव टू बी फ्रेंड टाइम। आपको समय को दोस्त बनाना है, उसको पकड़ना है। समय किसी के बाप का नौकर नहीं है कि आपके कहने से रुक जाएगा, वो चलता रहेगा, आप पीछे रह जाएंगे। और यही कारण है कि आज कोरोना फैल रहा है। अगर 2-3 महीने पहले अलर्ट हो गई होती दुनिया तो ये बात नहीं होती। इसीलिए क्योंकि वो लीडर भी आप जैसे हैं। आज की तारीख में मैं किसी को दुनिया का लीडर नहीं मानता, क्योंकि सब फेल हो चुके हैं, सब फेल है। कोई कंट्री का आदमी ऐसा नहीं है जैसे कहा जाए कि ये रियल लीडर है। मतलब एक रिफ्लेक्शन है हमारे कल्चर का, जो विश्व का कल्चर बन चुका है, सब पर जा रहा है वो। बड़ी से बड़ी कंट्री, गरीब से गरीब कंट्री, अमीर से अमीर कंट्री, सब पर जा रहा है। फिर भी छोटा सा देश आप भी कुछ कर पाया, जैसे बांग्लादेश, कुछ तो सीरियस समझ रहा है वो, कुछ है वो, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं है। इसलिए ज्यादा बनो मत, कुछ भी कहना, लिख के देना। अरे लिखो तो कम से कम, चलो माना आपने मुझे भी गलत लिखा, मुझे कोई दुख नहीं है उसमें, अपनी अंग्रेजी तो सही लिखो, वो भी लिखने नहीं आती आपको। दूसरे को कहते हैं भारत का हो गया, अंग्रेजी लिखता, अंग्रेजी बोलता, तो हमारे बाप का क्या जा रहा है भाई, मैं अंग्रेजी करता, मेरी मर्जी। आपसे पूछूंगा मैं भी क्या करना है, क्या लिखना है, आपसे मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, सैंक्शन दीजिए कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है। क्यों? कौन होते आप? आप होते कौन है? ठीक है, मैं आप नहीं मानता हूँ, इंग्लिश की अपनी भाषा मानता हूँ, क्या करेंगे आप? मैं नहीं मानता हिंदी को, क्या करेंगे आप बताइए? आप होते कौन है कहने वाले? इंडियन होके इंग्लिश में बात करते हो, तुम्हारे बाप का क्या लेता हूँ मैं।